मच रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी बिफोर अस सर। जब हम लोग वेट लेबोरेटरीज की बात करते हैं केमिस्ट्री में, खास करके बायोलॉजिकल साइंस में और बेसिक साइंस में भी बात करें, तो वेट लेबोरेटरीज इन्वॉल्विंग द वेरी गुड आइडियाज व्हेन वी परफॉर्म आवर एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग द एडिक्वेट एंड द अप्रोप्रिएट लिक्विड्स, बट with the progress of time, now a situation come before us through which dry laboratories activity and the actions may be very much effective before us. Today, this very afternoon, I just come on the point to discuss under what circumstances this dry laboratories is very much effective as well to come over the science research as correlated together. निश्चित तौर पर अगर हम दोनों को एक कंपैरेटिव चार्ट के रूप में भी देखें सर, तो वेट लैब इन्वॉल्व द डिफरेंट एक्टिविटीज एज लाइफ साइंस फोकसेस दैट मे इन्वॉल्व द टिश्यू कल्चर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द फिजिकल केमिस्ट्री एंड पैथोलॉजिकल एंड द क्लिनिकल रिसर्च एज वेल। लेकिन जो ड्राई लैब का कंसेप्ट है सर, दैट एक्चुअली बेस्ड ऑन द सिमुलेशंस ऑफ द कंप्यूटर जनरेटेड वर्क. Whenever we just concentrating about the dry work activity in the dry laboratories, then much more emphasis and the concentration become on the point through which simulations of the computer generated model in the work must come into practice. Calculations in the research primarily involves computational mathematics, physics and engineering. जहां तक laboratory equipment की बात है, so so far as wet lab is concerned, that being concentrating more and more over the liquid analysis and the experimentation. I would like to share most important word and line to all basic science researcher people at the initial level. जब हम लोग रिसर्च सर करते हैं और जब हम लोग लैब वर्क करते हैं इन द वेट लैब, तो मोस्ट स्पेसिफिसिटी इज देयर. हम लोग केमिकल्स लेंगे, हम लोग बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस लेंगे, हम लोग मटेरियल लेंगे एंड परफॉर्म आवर वर्क बाय टेकिंग द अप्रोप्रिएट एंड द सुटेबल लिक्विड्स अकॉर्डिंगली. लेकिन जब ड्राई लैब की कंसेप्ट हमारे सामने आई है, वी मस्ट नॉट बी टेक मच मोर रिस्क टू अंडरगो एंड परफॉर्म आवर रिसर्च वर्क एंड एक्टिविटीज. We must always be equipped with electronics, sir, large equipments, instruments, and dry materials that must be kept, that must be required to be kept very much specifically and dry fully. और जहां तक कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की बात आ गई, जब हम लैब के सेटअप में रूम सेटिंग की बात करें, जब हम कंप्यूटर सिमुलेशंस की बात करें, कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल की बात करें, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की बात करें और डाटा इंटरप्रिटेशन और डेटा साइंस की बात करें, बट द बात इज नॉट बेस्ड ऑन टू मेकिंग ए सॉल्यूशंस बाय टेकिंग द पर्टिकुलर लिक्विड इन द ओन लैब. बात इज नॉट कम ऑन द पॉइंट टू टेकिंग द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन एंड टू परफॉर्म द टेस्ट बाय टेकिंग द सर्टेन रिएजेंट ओवर देयर. तो वो तो वेट लैब की बात होगी. लेकिन जहां कंप्यूटर असिस्टेड एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, that based on the text interpretation, very much important component of the dry laboratories, and depending upon the coding as well and the quantum state analysis. My near and dear researcher, I would like to share this most important line before you. In order to make our dry laboratory research work in our science phenomenal steps, most important things is how data science is being coded and decoded and encoded, through which we can easily move ahead to perform our research in very good way. और जो cost effectivity है, that is very much low cost and accessible, because high in equipments, high in instruments can easily be accessible by taking all these things are there, and ability to undergo more and more extensive networking and access to perform our own work, which must be approachable, that must be accessed to the people of high level professional and all well read reached SS courses as well. और सर अगर मैं एडिशनल फीचर्स वेट लैब की बात करूं, तो दैट वन इज वेल नोन टू एवरी रिसर्चर्स फ्रॉम द वेरी अर्ली टाइम एज वेल. विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम, एज आई होप, जो अभी पेंडेमिक क्राइसिस पीरियड्स के समय में चला सर, हमारे संस्थान बंद थे, रिसर्च की एक्टिविटीज होती थी, और जहां तक भाइवा, पीएचडी थीसिस
investigations, inspections, corrections that actually based on the virtual mode. Even this lab work, course work are still being today is being conveyed on the virtual modes. तो जो dry lab का concept है, there is no need even to take the drop of the liquid to perform the experimental work in your lab. और ये room setting का बात होता है कि how to make control of the temperature, how to make the control of the humidity, how to make the control of the save power supply. That is important component of the dry labs. ड्राई लैब्स के लिए अगर मैं एक साइमुलेशंस की बात करूं रिसर्चर के समक्ष, तो ये कहने में बड़ा फक्र महसूस होगा कि whenever we have to perform the research through our dry lab activities, my near and dear researcher people, you must well acquainting with the softwaring programs of the data science. We must acquainting yourself with all the activity that being correlated with the simulations, computer generated model and the work through which you can move forwards, through which you can move ahead, through which you can move on the point, through which our experimental activity and the research can easily be correlated together. क्योंकि सर जब ये एक बात हमेशा आता है, many more times these questions are put before the students and the researcher कि साहब PhD आप किसी में कर लें, साइंस में करें, फिजिक्स में करें, केमिस्ट्री में करें, सोशल साइंस में करें, लेकिन PhD में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ही होता है। आखिर ये फिलॉसफी सब में क्यों आ गया भाई? डॉक्टर तो बात में समझ में आ रही है कि डॉक्टर इज द पर्सन थ्रू विच द पीपुल बिकम लाइसेंस टू एंड द पीपुल मे कम ऑन द पॉइंट टू डेलिवरेट और टू टीच, वो तो डॉक्टर हो गया। लेकिन फिलॉसफी का मतलब यहां पे क्यों हुआ? बिकॉज philosophy is made up of two words, philos and sophos. Philos actually signifying the loving and sophos is the wiseness, treasure of the knowledge, treasure of the wisdom, treasure of the voice. तो ये जो पावर है ट्रेजर नॉलेज का है, जिसको हम लोग की ऑफ द विजडम कहेंगे, पावर ऑफ द विजडम कहेंगे, नॉलेज ऑफ द ट्रेजर्स कहेंगे, वह हमारी फिलॉसफी से आता है। साथ ही साथ whenever you people just to go through the philosophy, then that the most important philosophy is nothing, it is the queen of science. फिलॉसफी को एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट ने कहा था कि फिलॉसफी इज नथिंग, फिलॉसफी इज द क्वीन ऑफ साइंस। साइंस की जो रानी है वह फिलॉसफी है, बिकॉज फिलॉसफी साइंस तो ये कहता है कि हाउ द थिंग्स अकर्स, लेकिन फिलॉसफी कहता है व्हाई द थिंग्स अकर्स। तो these are the correlationship between these two. साथ ही साथ फिलॉसफी का जो एक बेसिक टीनेट प्रिंसिपल है कि हाउ टू डेलिबरेट योर कंसेप्ट एंड इनोवेटिव कंसेप्ट एंड रिसर्चल कंसेप्ट बिफोर द प्लेटफॉर्म, तो फिलॉसफी कहता है कि माय पर्पस इज टू सर्च द क्वेश्चन एंड प्लेस द सर्च्ड क्वेश्चंस ऑन द टेबल फॉर डिस्कवरिंग द आंसर। और ये कैसे करेंगे? बाय क्वेश्चनिंग प्रोसेस, by discussing process, by argumenting process and by presenting process. ये चार प्रोसेस से फिलॉसफी में हम क्वेश्चन से आंसर तक पहुंचते हैं। और दिस फोर कंपोनेंट को अगर जोड़ दिया जाए, दैट कल्मिनेटिंग कंसेप्ट ऑफ रिसर्च, चाहे वह रिसर्च जिस किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। माय नियर एंड डियर रिसर्चर्स हु जस्ट ज्वाइंड हियर, आई वुड लाइक टू डिसेमिनेट दिस मोर pertinent concept before you. Whenever you start your research, the most important things to know the problem. Next, reviewing the literature. अब रिव्यू करें लिटरेचर का, either the lab work belong to the wet or the lab work belong to the dry, but you must go through the reviewing the literatures accordingly. And followed by जो ही आपने लिटरेचर को कर लिया, set up the study design. Now the third step is we must have to set up the study design on the basis of which we can easily move ahead, on the basis of which we can easily move forward. And followed by जो ही आपने स्टडी डिजाइन को सेटअप कर लिया, now deciding the design procedures. क्या डिजाइन का प्रोसीजर्स होगा? रिसर्च का डिजाइन आपने सेटअप कर लिया, स्टडी का डिजाइन आपने सेटअप कर लिया, now up to what level we move forwards, come on the point through which वह क्वेश्चन जो अनआंसर्ड था वह आंसर की ओर कैसे बढ़ेगा।
देन कलेक्टिंग द डाटाज। अब डाटा को आप कलेक्ट करेंगे एंड प्रोसेसिंग द डाटाज, एनालाइजिंग द डाटाज, एंड after processing and analyzing the data, come on the point through which these data come on the front side for discovery the unanswered questions that must be placed on the table, through which we researchers can review and renew and renovate and revive our own concept that has already been invented earlierly. And the last one, and that is the राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट। आप रिपोर्ट की राइटिंग करेंगे और वह रिपोर्ट की राइटिंग के बाद कंपाइलेशंस करने के बाद जस्ट टू मेक इट ऑथेंटिकेशन, एंड ऑथेंटिकेशंस मस्ट कम बिफोर अस थ्रू द रिव्यू लिटरेचर एंड जर्नल्स। आप उसको जर्नल में पब्लिश करते हैं, और हम लोग जर्नल में जब पब्लिश करते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट सा आता है कि हाउ टू मेक इट लेजिटिमेट डिस्कशन बिफोर द एकेडमिया। क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट सा आता है कि अगर हम कोई भी चीज ड्राई लैब्स या वेट लैब से ऑथेंटिकेट करना चाहें, वी मस्ट हैव टू पब्लिश, वी मस्ट हैव टू मेक द ब्रिलियंट lucid reflections our own work through the literatures, through the review, through the research papers, and that must be published in the reputed national and the international reputed journals. और एक बात जो बहुत स्पष्ट सा दिखता है सर, कि अगर हम ड्राई लैब्स की ओर बढ़ें, जो मैं अपने इस स्लाइड्स में साफ साफ दिखा रहा हूं, कि कंप्यूटर लैब में शुरू में भी कहा था, कंप्यूटर लैब्स, वर्क स्टेशन, कंप्यूटर सिमुलेटेड, कंप्यूटर जनरेटेड वर्क्स, 3D को कोरिलेट करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक लैब्स होना चाहिए, मास स्पेक्ट्रोमीटर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो द स्ट्रक्चर्स एंड द फ्रेगमेंटेशन पार्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट which being present in any compounds and the component, and electron microscopes and electromagnetic instruments lab. No doubt, my dear students and the researcher and all prominent fellows who just joined here, sir, ये तमाम जो टेबुलर फॉर्म में आपके समक्ष वेट लैब और ड्राई लैब्स के संबंध में कंपैरेटिव सेट दिखाया जा रहा है, that make the very lucid concept stepwise that under what circumstances we must move forward to make our lab activity as a dry one. निश्चित तौर पर मैं तो बार बार कह रहा हूं, being the teachers of chemistry, being the student of chemistry mind, myself inclination is very much enriched to set our experimental work through the making a solution. हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, हम लोग सॉल्ट टेस्ट करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेक्शन करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स बनाते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स का प्रिपरेशन करते हैं। निश्चित तौर पर that requires the certain liquid conditions, that requires the certain liquid experimental condition to perform up the experiment. लेकिन सर, with the progress of time, many more ambiguity are being come before us in our experimental labs that becomes headed purview of the wit. That's why nowadays it is very much pronounced and demanded and emerging that dry labs should be, techniques should be adopted in order to go forwards to attain the very accurate and immediate lab research activities which is being required, that I displaying through my slide before you. These are the things that I have already been narrated. Now it is very much important. Parts of the dry lab. मैं बार बार कह रहा हूं सर आप लोगों से कि जब हम लोग अपने ऑथेंटिफिकेशन को डिस्पर्स करने के लिए जर्नल में पब्लिश करते हैं, और जब जर्नल में पब्लिश करते हैं तो एक बात बहुत जहन में आती है कि आखिर किस जर्नल में पब्लिश किया जाए अपने पेपर को। ठीक है, आपने वेट लैब से परफॉर्म किया, ड्राई लैब से परफॉर्म किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे ड्राई एक्टिविटीज का आता है एकेडमिया एंड रिसर्च, पब्लिश द पेपर्स। तो ये जो पेपर हम लोग पब्लिश करते हैं, मेनी मोर टाइम्स आवर रिसर्चर्स पुट सच वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर मी कि सर कौन सा जर्नल अच्छा है। ये बात तो कहता है कि नेशनल इंटरनेशनल रेप्यूट जर्नल में पब्लिश कर दीजिए पेपर इन ऑर्डर टू मेक द ऑथेंटिफिकेशन रिमार्क्स ऑफ योर्स, बट विच वन बी बेटर। उसमें एक आता है impact factor. In order to judge the quality of the research paper, in order to adjust the quality of the journal in which your research paper is published,
that must be adjusted by this important terminology impact factor। कहता है कि जो जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर उस रिस्पेक्ट में ज्यादा है, कभी भी पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता है, हमेशा इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल का होता है, और किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर करेंट ईयर में नहीं होता है। एक जो बहुत बेसिक इंटेल है एकेडमिया रिसर्च का, वह है कि जिस जर्नल में आप अपना पेपर पब्लिश कर रहे हैं, अगर ये 2022 है तो हम 2 साल पहले 2021 में जिस जर्नल में पब्लिश किए हैं उस जर्नल से कितना रिसर्च पेपर का इंडेक्सिंग हुआ है, दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन द सेट ऑफ साइटेशन। इंपैक्ट फैक्टर क्या है? साइटेशन एनालिसिस। हम किसी पेपर को सर पब्लिश कर रहे हैं, अगर उसका साइटेशन एनालिसिस बहुत अच्छा है तो निश्चित तौर पर उस जर्नल का इंपैक्ट फैक्टर ज्यादा होगा, और हमारे द्वारा पब्लिश पेपर उस जर्नल में अगर छपा है तो आई फील वेरी मच प्राउड। हम लोग कहते हैं नेचर में पेपर पब्लिश हो गया। व्हाट डज इट मीन? व्हाई वी पीपल फील वेरी मच एलिवेटेड? कारण क्या है कि नेचर में पेपर जो छपा, उस पेपर का साइटेशन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम है इसका मतलब उस पेपर का वाइडली एक्सेप्टेंस है ग्लोबली। दैट्स व्हाई द इंपैक्ट फैक्टर इज हाईएस्ट। एंड नेचर्स में पेपर छपना मतलब अगर आप वहां छाप रहे हैं मतलब यू आर जस्ट द यंग साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई एज आई होप दैट ऑलवेज you people must try your best to rewrite your paper and trying your best to submit your paper before the academia science of the nature through which your paper may publish accordingly। तो जो 2 साल में उस जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ उसका अगर आपका साइटेशन मैक्सिमम है डिवाइडेड बाय कितना आइटम्स उस जर्नल का छपा हुआ है, अगर इसका जो रेशियो होता है दैट इज द इंपैक्ट फैक्टर। द इंपैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ साइटेशन इन द 2 years बैक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पब्लिश्ड इन दिस 2 year इज इक्वल टू इंपैक्ट फैक्टर। और इंपैक्ट फैक्टर कोई पूछे कि साहब नेचर का इंपैक्ट फैक्टर 022 का क्या होगा, इट इज रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन टू पुट बिफोर द पीपल ऑफ एकेडमिया। बिकॉज इंपैक्ट फैक्टर करंट ईयर का नहीं हो सकता है। इंपैक्ट फैक्टर जब भी होगा सिंस 2 years बैक, कैलकुलेशन जब भी होगा 2 years बैक। 22 का है हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 20-21 का होगा। 20-21 में उस जर्नल में जो पेपर पब्लिश हुआ है उसका कितना साइटेशन हुआ है और उस 2 year में कितना पेपर आइटम्स के रूप में पब्लिश हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे तो जो रेशियो आएगा वही उसका इंपैक्ट फैक्टर होगा। Or nowadays, as I hope that this impact factor is very much important quality to judge about the quality of the journal in which our research paper gets published। ये next component में मैं यहाँ पे part of the dry lab में लिखा हूँ bio specimen collections in the processing, very much important component। bio specimen banking, क्योंकि मैं शुरू में भी कहा था कि dry laboratories का main component है, main equipment है कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल, कंप्यूटर जनरेटेड सैमुलेशन, और कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल को इस रूप में सैमुलेट किया जाए इन ऑर्डर टू टेक द प्रॉपर ग्रास्पिंग ऑफ द फिजिकल रिल्म्स इन द प्रेजेंट सिनेरियो। दैट इज द जिस्ट एंड गोल ऑफ द ड्राई लैब एक्टिविटी टू परफॉर्म ऑफ द साइंस लैब वर्क एंड द साइंस रिसर्च। जीनोमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, बायो इंफॉर्मेटिक्स एंड डाटा साइंस बहुत इंपॉर्टेंट। डाटा साइंस मैं अभी जो हमारे शैलेंद्र कुमार सिंह साहब SPSS के एक्सपर्ट हैं, मैं शुरू में भी कहा था सर आप सोशल साइंस के लिए जो कंसेप्ट ड्राई लेबोरेटरीज के रूप में आपने सोशल साइंस में लिया है वही कंसेप्ट मैं ड्राई लेबोरेटरीज का अपने साइंस में ले रहा हूं, क्योंकि आपका जो SPSS है वो भी है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, वो भी आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस एंड डाटा माइनिंग पे बेस्ड है, जो आप अलग अलग साइंटिफिक एराज एंड कंपोनेंट्स का एनालिसिस करके हमारे रिसर्चर को आप प्रोवाइड करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटास के फॉर्म में, चाहे वो एनालिसिस अलग अलग विंग्स का क्यों ना होता हो। और मोस्टली सर आपका SPSS का एक्सपर्ट आप हैं, एंड योर यूटिलिटी मस्ट बी वाइडली रिफ्लेक्टिंग अमंग द पीपल ऑफ साइकोलॉजिस्ट
because many more data are required to perform the experiment accordingly. और जो फोर्थ कंपोनेंट है सर यहाँ पर वो है डाटा लाइब्रेरी, एंड वेरी मच मैं ये होप करना चाहूंगा रिसर्चर से कि व्हाट द डिफरेंट प्रोग्राम्स are still being sponsored by UGC in order to utilize and go through the sets of the libraries. As I hope you must use library, you must use the sets of data sciences, you must take the many helplines which is very much impetus force providers to the service of www like so, through which software programming be generated, and our activity of the research activity and the lab activity must be accordingly accomplished. Strategic rationales, now it is now important components for the dry and wet lab tools. यहाँ पर जो लिखा है कि scientists use both dry lab and the wet lab tools to conduct the research. तो dry lab में मैं बार बार कह रहा हूँ कि 4 component है सर: computational mathematics, physics, engineering and simulations and computer generated models. यहाँ पे experimental design is very important, management and interpretation, और experiment जो मैं लिखा हूँ यहाँ wet lab में, and that experiments जो basic science का है, that must be accorded, that must be put forth into practice in the usual sense when certain experimental condition based liquid be taken for performing our experiment. So that is the wet lab now. और wet lab job का बड़ा important है. There is clinical research, that is the bioprocessing, and like the physical cell biology, these all are the wet lab. लेकिन जो हम dry lab की बात करेंगे, जो मैं अभी कहा, academia and research, computational mathematics, engineering, technology, modulations, physical state analysis, these all are the very much component and dry lab jobs which being correlated together. It is data science as based on the intruvitogens and design primers for the gene identification with the dry labs, and the second one is the wet labs being analyzed together as based on the simulations of the computer generated model. जो मैं अलग अलग सेट्स में लिया हूं, यहाँ पर जीनोम का एनालिसिस कैसे होगा, जीन क्लोनिंग का लिया, जीन एक्सप्रेशंस का. इट इज जस्ट लाइक द life cycles through which these our research activity are still being going on and through the wet lab, but this is the study gene expression, management, simulation. ये जो आपका लेफ्ट इंड में जो ड्राई लैब के कंपोनेंट्स हैं, all are the model based. It is important now. ये 4 components जहां पर जो सेंट्रल लैब रोल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्वालिटी डेटा एनालिसिस है, तो यहाँ पर ये सिंपली होल कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन टेक्स्ट कंसिडरेशन. और कोई भी डेटा साइंस में टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, कोडिंग कैसे करेंगे, डी कोडिंग कैसे करेंगे, इन कोडिंग कैसे करेंगे, क्वांटम स्टेट एनालिसिस कैसे करेंगे, ग्राउंड स्टेट सिमुलेशन कैसे करेंगे, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे ड्राई लैब एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं. मैं समझता हूं कि ये ड्राई लैब एक्टिविटीज के माध्यम से you can easily go forwards and make your research with the good way. क्योंकि रिसर्च में रिसर्चर पीपुल एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बाधाएं तो आपके रास्ते में आएंगे निश्चित तौर पर, बट यू कैन नेवर मेक योर डिसपर्पजल फ्रॉम देयर. कभी उससे पजल नहीं होना है. जिस तरह एक छोटी सी नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. हम लोगों को हो सकता है वेट लैब एक्टिविटीज में, ड्राई लैब एक्टिविटीज में, व्हेन वी रिसर्चर पीपुल मूव फॉरवर्ड्स, मेनी मोर बाधाएं में कम बिफोर योर पाथ. लेकिन जब मैं डाटा साइंस की बात कर रहा हूं, तो डाटा साइंस में प्रॉब्लम तो आएगा सर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में बाधाएं तो आएगी, सिमुलेशंस में बाधाएं तो आएगी, लेकिन in order to make very effective researchers we all are, you must assimilate your badha in such a way that quite and good results must come forwards. यहां पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखा गया है कि राइटिंग एंड पब्लिकेशन शुड बी मेड थ्रू कंटेंट एनालिसिस गाइड बुक.
और वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो मैं कहा कि ये हम लोग का ड्राई रिसर्च केवल डाटा साइंस पे बेस्ड है, तो उसका जो भी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, इवन यू कैन यूज वीडियो गेम्स, वेब 2.0 साइट्स, यूजीएम, यूजर जनरेटेड मीडिया एंड यूएसएम एज वेल, MySpace, Facebook, YouTube, Wikipedia, and these all are the very much important platforms through which you can disperse your concept, you can receive your concept, you can go forwards and make your concept become very much pertinent in order to take our effective results accordingly. It is important. For consideration, जब हम लोग कंटेंट का एनालिसिस करते हैं, बीइंग द रिसर्चर वी ऑल, क्यों आपसे मैं शुरू में भी कहा सर कि आखिर पीएचडी आप किसी में कीजिए, फिलॉसफी लगना बहुत जरूरी है, बिकॉज फिलॉसफी इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है फिलॉसफी जो है वह है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इट ब्रिंग्स all the considerations, it brings all the considerable questions to the table to find and search the required answers. अब required answer कैसे करेंगे? क्वेश्चनिंग करके करेंगे, पुटिंग द क्रिटिकल डिस्कशन करके करेंगे, आर्गुमेंट इफेक्टिव आर्गुमेंटेशन करके करेंगे, और बहुत नाइस प्रेजेंटेशन के माध्यम से करेंगे। और यही चारों चीज मिलके रिसर्च का एक रूप देता है। तो निश्चित तौर पे रिसर्च में चारों कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, और चारों कंपोनेंट आर द बेस्ट पिलर्स टू मेक द सिस्टम ऑफ फिलॉसफी एट द पिलर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्स। दैट्स व्हाई व्हेन वी पीपल जस्ट टू से हमने चारों काम करके साइंस में, केमिस्ट्री में कोई चीज खोजा है, तो हमने फिलोसफिकल कंसेप्ट को लिया है। इसलिए हम लोग पीएचडी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन केमिस्ट्री, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फिजिक्स, लाइक सो। क्योंकि यहाँ पे ग्रीक में जो फिलॉसफी का जो दो कंपोनेंट मैंने अभी बार बार कहा कि फिलॉसफी, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर इज ए पर्सन लाइसेंस टू, जिस व्यक्ति ने चारों चीज किया, क्वेश्चनिंग किया, डिबेटिंग किया, डिस्कशन किया, डेलिबरेशन किया, इनरिचिंग किया, ऑगमेंटेशन किया, आंसरिंग किया और प्रेजेंटेशन दिया। ये डॉक्टर उसके लिए आ रहा है, द पर्सन बीइंग लाइसेंस टू, और द पर्सन हु टीच द डिलीवरी बिफोर आवर ऑडियंस, बिफोर आवर प्लेटफॉर्म, बिफोर आवर कंसर्न सेट्स। तो ये डॉक्टर ऑफ फिलोसफी वो जो कंटेंट को ढूंढा, उस ढूंढने में इस 4-5 कंपोनेंट को यूज किया। दैट्स व्हाई बिना उसको यूज किए हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, हम इन्वेंट नहीं कर सकते हैं, हम रिसर्चर नहीं हो सकते हैं। दैट्स व्हाई द टर्म ऑफ फिलोसफी पीएचडी और बड़ा फ्रीक्वेंटली भी यूज्ड टू ईच एंड एवरीवन। जो मैं भी कहा कि फिलोसफी इज द टू वर्ड्स फिलोस एंड सोफोस। फिलोस इज द लविंग एंड सोफोस इज द विजडम एंड पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ विजडम। नॉलेज का ट्रेजरर हमारे फिलोसफी में है, और निश्चित तौर पे दैट गिविंग द इम्पेटस फोर्स टू एवरी रिसर्चर टू गो फॉरवर्ड्स, टू रिन्यू द कंटेंट, to forward the content, to invent the content, and to discover the content in very new forms. That's why philosophy, doctor of philosophy, must be commonly used to every science, excepting medical science and excepting the law as well. ये दो कंपोनेंट में हम लोग पीएचडी में डॉक्टर जैसे कर देते हैं पीएचडी, तो जरा सा हमारे कुछ एक्सेप्शन मेडिकल साइंस में और लॉ फील्ड में कुछ दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर जो 4 चीज है, क्रिएटिंग कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी आपसे कहा भी, सर्चिंग द कंटेंट, सर्च कीजिए सर, क्योंकि सर्च करने का रास्ता दोनों लैब का अलग अलग है, वेट लैब का और ड्राई लैब का। जब हम लोग ड्राई लैब को यूज कर रहे हैं, सर्चिंग द कंटेंट थ्रू द डिफरेंट सॉफ्टवेयरिंग प्रोग्राम्स, searching the content by adopting all the different data science still that we have, by using the different social media platforms as well, archiving the content and coding and analyzing the content. It is very much important component to go forward in order to invent our opinion in the content on which our whole considerations of the research are purely depending upon. और जो मैं भी आपसे कहा सर कि creating the content, it is very much important of the new media and the new interactive media, because बहुत हमारे सैलन सिंह साहब यहाँ हैं और जो SPSS के एक्सपर्ट भी है सर। I just share with one more important things, because
treasure of the knowledge of statistical package among the class of social science still that you have, and many more tools that I displaying through this slide before you among the peoples of basic science in order to disperse the quiet dispersions of the tools of the social media and the data sciences in order to perform the experiment accordingly. And the Web 2.0 users can create the content within the template provided by the site. Very important. Video games players may also become before us. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. ये दो इंपॉर्टेंट, UGM and the UCM. UGM is the user generated media and UCM is the user collected media. It is very latter, providing sets that must be reset on the data sciences on the TV and YouTube and make the quiet dispersions in the videos forms. It is specific content issues that may come when we just go in the proper depth of the things as concerned. Player skill, time frames, character choice, each and everything's templating become before us through the different shots of the videos, different shots of the social media as being implied accordingly. Second one is searching. और रिसर्च सर्च करता है सर. जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं, री और सर्च, one things must always put our mind when the research activity are still being going on. कोई चीज अगर पहले से इस्टेब्लिश है, अगर उसका रिफरेंस लिया जाए and go forward to renew the next things that being correlated with the earlier one, ताकि जो earlier one वाला established था, that will provide the impetus force to us to go forward, that provide the catalytic force to us to go forward, that provide the assimilating force to us to go forward in order to search the new things by undergoing different computer generated model, by undergoing different computer generated simulation, ताकि हम उसको अपने रियल फिजिकल रियल्म में देख सकें और जो चीज रिन्यू है, जो इस्टेब्लिश हो गया है, जो प्रिसिपिटेट कर गया हमारे नॉलेज होराइजन में, then that must come through the form of activities as the new researcher content. तो सर्च इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. अब हम लोग सर्च कैसे करेंगे? तो मेनी मोर डिवाइसेस स्टिल वी हैव, मेनी मोर प्लेटफॉर्म स्टिल वी हैव, मेनी मोर मीडियाज स्टिल वी हैव. बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूं सर कि ड्राई लैब इज नॉन लैबोरेटरी लैब. अगर मैं कह रहा हूं कि लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं in order to renew and go through the new research activity in chemistry and physics and biological science, तो सर वो वेट लैब है. लेकिन अगर नॉन लैबोरेटरी लैब अगर है, नॉन लैबोरेटरी एक्टिविटीज है, नॉन लैबोरेटरी रिसर्च हो रहा है, तो वह आपका ड्राई लैब एक्टिविटी से संबद्ध होगा. और जो वो ड्राई लैब एक्टिविटी से संबद्ध होगा, माय डियर, then you must reflecting your idea in the very lucid way in your mind, then things must correlating with the computer simulated and computer generated. What the different platform you may use, what the different simulated models still that you have, that you recollect it from the data science, what the different software programs still that you have, in which all such kind of considerable things are accumulated together through the quiet dispersions on the certain platforms, you can do research accordingly. ये सारे के सारे हमारे ड्राई लैब एक्टिविटीज से बिलोंग करता है. एक बार एक सवाल इंटरव्यू बोर्ड में पूछा कि साहब ड्राई लैब एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, आप तो लैब तो देखा नहीं? कहता यस, मैंने लैब देखा है सर, लेकिन वो लैब नहीं देखा है जिस लैब में बीकर है, जिस लैब में टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है, जिस लैब में हुड्स रखा हुआ है, जिस लैब में रूफ रखा हुआ है, जिस लैब में बीकर पिपेट रखा हुआ है. मैं वो लैब तो नहीं देखा. मैं वो लैब नहीं देखा सर जिसमें बायोलॉजिकल स्पेसिमेन रखा हुआ है. मैं वो लैब देखा सर जिस लैब से मैं आसमान में भी रिसर्च कर सकता हूं. मैंने वो लैब देखा है सर जिस लैब से एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश कर सकता हूं. और वो लैब है एनालिटिकल लैब, वो लैब है नॉन लैबोरेटरी लैब, वो लैब है कंप्यूटर जनरेटेड लैब, वो लैब है
कंप्यूटर सिमुलेटेड लैब, वो लैब है कंप्यूटर इस्टेब्लिश्ड लैब, and that lab is the component of the chief mainframe of the dry lab activities. My dear researcher, as I hope, you must utilize your whole considerations of the data science and the software through which you can move forwards, make the innovations by your own ends, by taking the perceptive concept of the research through all the simulated forms of the certain topics and go forwards and make the renew and the research activity by your own end. Third one is archiving. It is very much important even now. मैं बार बार कह रहा हूं सर कि चारों कंपोनेंट्स में जो रिसर्च के स्टेप्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, through which all the analysis activity is being coded and decoded together, all these things are being correlated together and come forwards and giving the good results always. बहुत important कोडिंग. Whenever मैं बार बार कह रहा हूं कि ड्राई लैब एक्टिविटीज इन साइंस एजुकेशन में चार कंपोनेंट: डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालाइजिंग द डाटास, प्रोसेसिंग द डाटास, कोडिंग द डाटास, encoding the datas, and quantum state analysis. When all these six components are combined together and having the good aura still that we have of the dry activities, dry lab activities to perform our the research, then this coding itself is the one important component accordingly. These all are the different social media platforms through which you can come on the points and get all these things by your own ends to make the content analysis. It is important. Sampling questions, whenever the best way of the Facebook profile, Twitters, handlers, and the Instagram, these all are the platforms that you can use. Training and reliabilities, selected results, it is content, it is the same things. It is now just come. It is now the second component of the dry laboratories starts when the chemical informatics as the grid applications are required. Because chemical informatics is nothing, applications of information and technology, applications of IT sections in chemistry. अब मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां पर भी IT सेक्शंस का इनकलकेशंस हम केमिस्ट्री में और नेचुरल साइंस में टू नो आवर डेटा, टू नो आवर ड्रग डिजाइन, टू नो आवर ड्रग डिस्कवरी, टू नो आवर मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, टू नो आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटी मैकेनिज्म, ऑल आर वेल कंसर्न विद द केमिकल इंफॉर्मेटिक्स. और वह किस रूप में होगा? इन द फॉर्म ऑफ ग्रीड एप्लीकेशंस. तो फॉर दैट सपोज टू बी managing data in large scale drug discovery and molecular modeling. It is important because whenever the dry laboratory concept are being put before us, then these two concept are, हम लोग ड्रग का डिजाइनिंग कैसे करेंगे, ड्रग डिस्कवरी का मॉलिक्यूलर मॉडलिंग कैसे करेंगे, ये भी हमारे डाटा साइंस से ही जुड़ा हुआ है, डाटा माइनिंग से जुड़ा हुआ है, डाटा क्लस्टरिंग से जुड़ा हुआ है, क्वांटम केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है. ये भी each and everything are correlated together with the web resources, journal and the articles. These things, that's why I would like to disperse and share most important line before our young researcher that how this grid application is very much impetus providing forces in order to come on the forefront of the chemical information and chemical informatics so far as dry laboratories is concerned together. Because जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे केमिकल इंफॉर्मेटिक रिसोर्सेस का है, दैट बीइंग डिस्पर्स्ड बिफोर यू NIH PubChem, NIH DTP like so, Department of Theoretical Pharmacology and Data Mining, Visualization Tools, वेब रिसोर्स में हम लोग लिखे हुए हैं, जर्नल्स एंड द आर्टिकल इटसेल्फ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गो फॉरवर्ड्स. अब है कि यहाँ पे एक टर्म आ रहा है रिपीटेडली कि हाउ दिस प्रॉब्लम्स ऑफ connecting with grid make it very much simplified in our computing system.
The problem is denying in architect, because whenever go forward of the research in our basic science, so far as use of dry laboratories associated together, then these components itself is very much important to make a grid, and grid is the combinations and accumulations and combination of all the different components together through which we can procure our information and go forwards. कैसे हम लोग कहते हैं ये ग्रिड है, पावर ग्रिड है, तो पावर ग्रिड है तो वहां से एनर्जी का डिस्पर्सन और रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो वो ग्रिड सिस्टम आसानी से वहां के ऑफिस वाले बताते हैं। तो यहां पर भी हमारा ग्रिड केमिकल ग्रिड बन गया, और उस ग्रिड से हमको इंफॉर्मेशन को रीडिस्पर्स करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, डिसेंट्रलाइज करना है, हमको बांटना है उस डिवाइस, अलग अलग डिवाइस के माध्यम से। It is very much important being utilizing more and more over there in nowadays when the concept of dry laboratory is being put forward. These all are the roadmap for the medical research. These all are the things that I sharing before you by taking the different sets of the coding and decoding systems and the data-based information. High throughput screening system of the dry lab, actually these are the things that I displaying before you. how this, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ड्राई लैब में कंप्यूटर सिमुलेटेड होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, एक ऐसा रूम होना चाहिए जो पावर सप्लाइंग बेस्ट हो, ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो, आपका स्मोक एंड डस्ट कंट्रोल हो, क्योंकि वहां पर इट इज वेरी मच रेसिस्टेंट टू ऑल दिस impurity and malified best of the components that make the environment become very much vitiated. High throughput screening. It is what the means are that, because many more servers are still in our biological science through which we can code and decode our nucleotide sequences. Very important one is supposed to be, I take proteomics, and proteomics is a server through which we can easily decode the nucleotides that may contains as a 3 lakhs of the organism, and that being decoded very easily by using the certain servers accordingly. तो यहाँ पर हम लोग उसका screening करेंगे, and these are the datas and the minutes that being displaying before you through these slides. Informatic implications. Now it is important because computational representations of the 2D structures and computational representations of the 3D structures, it is important. हम लोग केमिस्ट्री में और बेसिक साइंस में जो 3D स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड्स, ये हमारे ड्राई टेक्निक्स, ड्राई लेबोरेटरीज का टेक्निक है। हम लोग 3D टेक्निक्स आसानी से अपने उस लैब में जाएंगे, कौन सा लैब, कंप्यूटर लैब में जाएंगे, जहां पर कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर रखा होगा, sample is taken there, and just to visualize about the 3D structure of all those samples that we collect for our more and more investigations and going forward research work as well. Web services, very important. Web service provide the means for wrapping the databases, बहुत important. Applications and web scavengers, etc. with programming interface. And many more web services are there, as the WSDL, web services, SOAP, UDDI, MDS. These all are the important web, www and worldwide web services. जो हम अलग अलग वेब सर्विसेज जो प्रोवाइडर करता है हमारे लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस के प्रोफेशनल को, हमारे रिसर्चर को, by taking the others platform through which we can go forwards, and by using all these tool kits as well, through which we can procure the information and go ahead for our research activity accordingly. These all are the things. I give the pinpoint representations of the browser, web server, DB, browser, web server, and how it becomes correlated together, and just to set up your lab, just to set up your lab activities, just to set up the room, which is temperature control, which is dust control, which is humidity control, with full power supply, which is with a very important component of the dry laboratories in which we can go forward to undergo our activities of the research accordingly. Grid resources. Many more things are there
Many grid tools provide the powerful backend services. It is very important because मैं कह रहा हूं कि ग्रिड है, अब उस ग्रिड में इंफॉर्मेशन चाहिए, उस ग्रिड में जिसे कहते हैं बिजली चाहिए, बिजली जनरेट करके हम लोग पावर ग्रिड पे पहुंचाते हैं. And whenever we perform our research through this grid system and grid resources, then how this resource of the different components combines together and giving the information to the grid, and from where this become dispersed to the concerned one. तो वहां पर एक different tool kits है, जिस tool kits को हम लोग यूज करके, जिस वेब सर्विस को हम लोग यूज करके उस हम लोग एक प्रोवाइडर के रूप में यूज करेंगे, और जिसको जरूरत है हमारे रिसर्चर को, हमारे कम्युनिटी को, हमारे प्रोफेशनल को, हमारे सोसाइटी को, हमारे इन्वायरमेंट्स को, हमारे सराउंडिंग बेस्ड पीपुल को, उसको प्रोवाइड करेगा और हम लोग उसको यूज करके गो फॉरवर्ड टू अंडरगोइंग आवर ओन रिसर्च अकॉर्डिंगली. It is the same things here, domain tools and standards regarding the chemical informatics. Many more chemical strings representations are there. Chemical markup languages are still very much important. Toolkits are still being important to go forwards, because open Babel is very important to take the chemical informations and through which we can easily draw the chemical structures, and through which we can simulate the structures of the sample with the real structures. Either जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ये सारे के सारे हमको इस इंफॉर्मेशन से, इस वेब सर्विसेज से, इस टूल किट से, इस प्रोवाइडर से आसानी से हम लोग मैच करके अपने सही रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं. वर्क फ्लो. सपोज टू बी वी स्टार्ट आवर वर्क. मैं तो शुरू में कहा कि जब रिसर्च हम लोग शुरू करते हैं तो नोइंग द प्रॉब्लम्स, रिव्यूइंग द लिटरेचर, डिजाइनिंग द कोर्स, डिजाइनिंग द रिसर्च रूट, ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं, कलेक्टिंग द डेटास, प्रोसेसिंग द डाटास, एनालाइजिंग द डाटास एंड रिव्यूइंग द डाटास, ऑथेंटिफिकेटिंग द डाटास, डिस्पर्सिंग द डाटास एंड आफ्टर राइटिंग द रिपोर्ट. ये तमाम कंपोनेंट हमारे रिसर्च के अंतर्गत आ रहा है. चाहे क्योंकि जितना चीज हम बता रहे हैं सर आप लोगों के समक्ष, जितना मैं शेयर कर रहा हूं आपके समक्ष थ्रू आवर ड्राई लैब एक्टिविटीज, निश्चित तौर पे एज आई होप दैट गिविंग द गुड ट्रेजर्स ऑफ द नॉलेज थ्रू विच वी पीपल कैन यूज इन द कमिंग फ्यूचर्स एज वेल टू गो फॉरवर्ड्स. और निश्चित तौर पर ड्राई लैब एक्टिविटीज न्यू ही कंसेप्ट कहा जाए व्हेन द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर जनरेशन बिकम्स स्टार्ट. उसके पहले तो लैब में जाते थे, बीकर से सॉल्यूशन बनाया, फिर जो एनालिटिकल टेस्ट करना है परफॉर्म कर रहे हैं, वो वेट लैब एक्टिविटीज था. स्पेसमेन, बायोलॉजिकल स्पेसमेन स्टेन करना है, फिर आपका बायोलॉजिकल स्पेसमेंस की डिप्लीटिंग करनी है, you can perform the certain staining reagent for that. All are the wet activities. लेकिन जहां simulated work हो रहा है सर, जहां all work are based on the computer generated model, all works are based on the data science, all works are based on the data interpretation, all works are based on computational mathematics, all works are based on mathematics, physics and engineering. तो वहां पर कोई वेट लैब का कंसेप्ट नहीं है. All the labs work activities that being correlated together, making the good, upright and the straightforward consideration on the people's and the humans mental level that must comes under the purview of the dry activity and the dry laboratories activity like so. Itself is important components as based on the whole consideration that being correlated together with the user's interface. हाँ, अब मान लिया जाए सर, I start my research, I go through the activity through the dry lab activities, I just consider all those things there. Many more platforms, many more sets through which we can interact together in order to make that transparency, in order to make our whole considerations in a very lucid way. तो वहां के लिए हमको इंटरफेस इंटरेक्शंस बहुत जरूरी होता है, and these are the things that I displaying through this slide before you. Review the online database resources,
journal database, it is important, data encoding, data scavengers, these all are the things which is being required to go forward in the dry lab activities. ये different online journal database I just share, you people may take the help of all those things, and for the quiet dispersons and making the being very much pertinent to publish the things accordingly as well. जो मैं भी आपसे कहा भी सर कि हम लोग अपने पेपर को ऑथेंटिकेट करने के लिए उसको जर्नल में पब्लिश करते हैं, और जर्नल का इंपैक्ट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किसी पेपर का इंपैक्ट फैक्टर नहीं होता है. What the impact factor is still that we have, then that based on the journals itself. It is a chemical machine languages. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लिया जाए हम किसी चीज को इन्फोर्स करने के लिए, जानने के लिए, इनक्रॉस करने के लिए, कोड और डिकोड और इनकोड करने के लिए केमिकल इंफॉर्मेशन में, तो हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसका एक लैंग्वेज चाहिए, उसके एक प्रोग्रामिंग चाहिए, उसका डाटा बेस्ड स्ट्रिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए. ये तमाम लैंग्वेजेस आई जस्ट शेयर बिफोर यू, through which you can use and go forward and make the very upright research activity in your basic science. These are the things that I saying before you. आप आसानी से इस टूल किट्स के माध्यम से आप इसके स्ट्रक्चर्स को, इसके कंसिडरेशंस को, कहाँ पे इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, नोइंग फ्रीक्वेंसी, स्टिपिंग फ्रीक्वेंसी, डोइंग फ्रीक्वेंसी, कहाँ इसका लाई करेगा, या आसानी से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं by taking these tool kits accordingly. Very important, IUPAC and National Institutes of Standards and Technology and standards just similar to the SMILES as well. इसमें हम लोग किसी स्ट्रक्चर्स को कंपाउंड्स का दिया हुआ है, उसको इनकोड करके, स्ट्रक्चर्स को मिलान करके उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, then these all kits are very much important. That being, हम जिसको कहते हैं केमिकल आइडेंटिफायर. Supposed to be we have to identify the components with the sample one. Either it is right, मैंने जो किया, अब ये कहाँ तक उसके अप्रोच के नजदीक है या दूर है, then we must have to identify it. In order to make such kind of set of identifying right or wrong, then we must go through the toolkits of accordingly. These all are the database that being correlated together to make forwards and make the database analysis through the ground geographical analysis through chemistry in basic science, in which all considerations of the interpretation of the data must come on the front to make the concept become very much clear and provide the catalytic force to go forward in the chemical and the basic science researches. These are the journal and the software that I shared through this slide before you. You can use it and go forwards and make the lucid reflections of the research work by using your dry lab activities. Chemistry markup language, these all are, sir. You can use it. SMILES. So it is very much important that I take one more example. A proprietary SMILES is the different algos that give the different results. 7 different Unix. एक example मैंने लेके दिखाने का प्रयास किया हूँ कि if you just take this example, many more bonds are there, many more substituents are there. It is caffeine and कहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ पे डबल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी अधिक है, कौन सा रिंग एरोमेटिक है, कौन सा रिंग नॉन एरोमेटिक है. इन तमाम कंसिडरेशंस को एडजस्ट और फिट करने के लिए केमिकल सिस्टम में आइडेंटिफायर इज इंपॉर्टेंट एंड स्माइल्स दैट यू कैन यूज फॉर इट एज वेल. द सेम थिंग्स एज दैट इज correlating to us. Clustering techniques and computing requirements and clustering services. You can go forwards and these things may come on the, because clustering itself is important one. क्योंकि मैं शुरू में भी कहा था डाटा साइंस के इंटरप्रिटेशन में डाटा को क्लस्टर करेंगे, क्लस्टर करने के बाद कोडिंग और इनकोडिंग करेंगे और उसके बाद सैंपल से उसको एडजस्ट करा के आप ऑथेंटिकेट करेंगे कि आइदर द गिवन पॉइंट्स आर रॉन्ग और राइट, और उसके आधार पे डेविएशन ऑफ द रिसर्च यू कैन इजिली फाइंड आउट. These all are the same things. You can making the clumping, coding, decoding, encoding and clustering, and after that come on the point to discuss about the authentication of the research, because everything are based on the data science. That's why is each and every components come under the purview of dry lab activities. बहुत important fingerprinting
and dictionaries, was it parameter space? Because मैं शुरू में भी कहा कि clustering algo requires a parameter space whenever certain parameters that you take for identifying and adjusting the chemical structure by taking the particular compounds, fingerprintings, adjusting authenticity, rightness, wrongness, all these things may all be well discussed through this kind of fingerprinting process and dictionary that even we use accordingly. Cluster analysis and chemical informatics, these all are the different methods जो मैं अभी कहा. एनालिटिक मेथड्स क्लस्टरिंग से केमिकल कंपाउंड या सैंपल को एडजस्ट करके कंफर्म करते हैं, और केमिकल इंफॉर्मेटिक्स मेथड्स में मींस एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू द केमिकल साइंस. These all things are equally very much important to go forwards and make the concept become very much clear accordingly. Limitations of the words methods, it is important now that correlated together and making the whole considerations that either the requirements of the research are being data science considerations and the data interpretations either become well addressed or not. These platforms and methods as proposed by words, and this is the large data sets, and limits are still being given here. Scaling up the clustering methods, it is important, and that is the parallelizations of the methods that associated together, and that is the new methods, algo divisive methods, k-means methods, that is inclusive methods, and आपका एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव मेथड्स. जैसे हम लोग रिसर्च भी करते हैं, रिसर्च एक्चुअली there are two methods still that we have. Supposed to be we just involve the research because research के बारे में कहा गया है कि research is the systematic inquiry to discover, to explain, to predict, and to record all those things as the inquiry concern of the observed phenomena. अगर observed phenomena का हम events का observed events का हम अगर establishment कर रहे हैं, know just to know about the observed event that is going on, and that is based on the inductive research. The inductive research, and that based on these two things, inductive and the deductive. Inductive research are the qualitative, but the deductive research are the negative, that is the quantitative. तो जो आपका inductive research है, जितना ये dry lab activities हम लोग कर रहे हैं, वो inductive है, that is not the deductive methods. That is qualitative, that is not the quantitative methods. Whenever we people just to use, because research are the two wings, one wings as the inductive and the second wings as the deductive. The deductive methods wings that based on that where the quantitative methods being considered at all. But the inductive methods जो होगा, that must be correlators on the whole, that being correlated together because that analyze the observed event. लेकिन जो deductive होगा वह आपका verify the observed event. अगर verify करके किसी को हटा देते हैं वो डिडक्टिव हो गया, और एनालाइज करते हैं अगर किसी ऑब्जर्व इवेंट्स का, दैट मस्ट बी द इंडक्टिव रिसर्च. द रिसर्च में बी go through these two heads through which we can move forwards and making the whole considerations accordingly. These all are the clustering that repeatedly we people just to use accordingly and go forwards making the whole considerations as BCI. It is important now what the different operations we use, because K bench and sets of the K means division step को मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हम लोग अपना सिमुलेशन मॉडल बना रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर मॉडल बना रहे हैं, हम लोग होल सेट ऑफ कंसिडरेशंस मॉडल बना रहे हैं, तो उस केस में हमको डिवाइस का इंटरप्रिटेशन चाहिए, डिवाइस का स्टेप चाहिए. तो उस स्टेप्स को कोरिलेट करने के लिए द थिंग्स मस्ट बी वेरी मच क्लियर दैट दीज थिंग्स आर कोरिलेटेड टुगेदर इन सेम फॉरवर्ड्स. It is a clustering frequency that will be represented through this words K means, divisive means, because these are the different toolkits and the clustering patterns executions that being drawn through this graph. You can take the help in the later on as well. This is the conclusive ideas that K means are very much suitable to know about the very large data sets, and some of the important inspections as based on the experimental sets as correlated together, whole considerations as correlated together either
it is being experimental sets or not, or the tera grids like so. Very effective exploitation of the large volumes and the diverse source of chemical information is a critical problem to solve all the considerations that the users people can use accordingly. Because some chemical structure searching journal important, INSSCHI, automated patent searching important, effective data sets organizations it is important, and some things are still important that people should know, that effective data set organization and effective interface, either it is clear or not. Whole consideration that becomes correlated together, that must be whole considerations, that must be whole sets, that must be data interpreted, and that must be the whole sets that being correlated together. That's why we must be very much vigilant, that considerations should be quite clear. It is now flow chart of smiles to cluster partitions of BCI web services. These all are the whole consideration, that is the generated fingerprints, dictionaries, and that is the extracted clusters, k-means, fingerprint considerations, smiles strings, merge processes through which we can easily go forwards and make the whole considerations properly. Because data science and data science collections and data science dispersion through the web services, this is the main component of the dry lab activities in order to perform our science educations and the science research. These all are the input and output activity of the toolkits that I am displaying before you, and all the services are correlated together. These all are the data. These all are the data as well. This is the flow sheet. This flow sheet you can use and go forwards, make the sketching of each and every one, and come forward of the respective research activity of the paradigms, scale, sketching, services, input and output toolkits you can use, and make the tax-free services as well, through which you can adjust and simulate and mismatch and match the structures of the chemical compounds. It's all are the flow sheet and the considerable fact of the grid programs. It is important. Finding compounds and protein relationship. Because one more important things that been correlated, proteomics. हमारा एक टर्म आता है ड्राई लेबोरेटरीज में कि proteomics क्या होता है, and proteomics and the data gene bank activities. तो proteomics is nothing, it is the XPACY, expert protein analysis system. तो यहाँ पर भी हम लोग प्रोटीन का जो रिलेशनशिप है लिगेंड के साथ, किसी कंपाउंड को जानने के लिए, किसी कंपाउंड को रिवेंट करने के लिए, किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को निकालने के लिए, then this flow sheet DTF database is very much important, through which you can use and make on the conclusion to correlates and confirm about the correlationship of the compound. It is right now. Similar structures are filtered, and certain docking process is still being very much important to know the compounds and to know the relationship with the protein and nucleotides. Some important one is the gene bank, NCBI gene bank. So it is very important comprehensive database
nucleotides of the 3 lakhs organism that being combines together. हम लोग डाटा साइंस के हिसाब से उसको अलग करके डिकोडिंग करके भी जानने में सक्षम हो पाएंगे. एंड इट इज अ वेरी मच टीनेट कंपोनेंट्स ऑफ द ड्राई लैब एक्टिविटीज. डाटा करके हम लोग अपने डाटा को ऑथेंटिकेट करते हैं कि व्हाट द फिल्ट्रेशन दैट वी मेड फॉर आवर रिसर्च, either it is authenticated or not, that is very much important to go forwards. And we can easily take the cluster analysis, fingerprint analysis, visualization analysis, and data interpretation analysis, and the ground quantum state analysis. By using all these hits, you can come on the point to discuss more. It is scenarios coordinated with the workflow, HTS data organizations in the flagging. Whenever you take the flagging by taking different device. विजुअल नहीं है सर, पीपीटी विजुअल नहीं है सर. अच्छा, right. Now it is visible, sir. Now it is visible. नो सर, अभी तो नहीं है. सर विजुअल हो गई है. It is right now. Okay. So this is very much important flow sheets that making the whole combinations of the fingerprint generators and its visualizers, talking to know the compound by 2D or 3D techniques, docking selectors as well, plot visualizers, table management. By taking the whole flow sheet, we come on the point either through the biological science and chemistry or biology in which such kind of system operations are being established. Good ligand for my target, it is important because whenever ligand is what? Ligand is just a component that becomes joined together and making it some more effective compounds. तो वहां पर हम लोग ये कैसे पता करेंगे कौन हमारे टारगेट्स के लिए गुड लिगेंड्स है? तो अलग अलग हमारा उसमें डॉकिंग डाटा साइंस दिया हुआ है, हम लोग उसमें मैच करके देख लेंगे इन विच केस डॉकिंग frequency is maximum or in which case it is weak. On the basis of that, you can visualize about the ligands appropriation, either it is appropriate to that compound or not. These structures presentation, structures authentications, structures considerations, you can easily make it through this biological and the chemical G markers. You use it and go forwards. Academic research, it is very impetus force that provide the good to in our dry activity target oriented होना चाहिए, molecular analysis level पे जाना चाहिए. Mechanisms is very much important to go forward through the dry activities that must be simulated, cost effective होना चाहिए, and that must be accessible because dry laboratories का सबसे बड़ा फायदा क्या है सर बेनिफिट में? And that one is very cost effective, or that is access to all professionals and all the desired people that being very much inclined associated together with the peoples of professional sites through the simulated and the physical realms through our computer generated models. इसलिए इसका accessibility बहुत अच्छा है and बड़ा extensive networking is being required in order to make it more and more upright. These are the AutoZF, Varuna as a workflow, and these all are the very important. That is, metalloproteins are extremely important in biological process. How to make it broad and how to make it up, and where it should make more effective. We people can easily use it in order to appropriacy of the same things. It is automatic generators of the force fields. Developing a service that can give any drug-like molecules, it is important. Metal complexes बहुत important. Metalloenzymes very important now because हम लोग कहते हैं कि हेमोग्लोबिन में सेंट्रल एटम्स आयरन है. Just like that, फोटोसिंथेसिस में जब हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल, सेंट्रल एटम इज मैग्नीशियम देयर. How to make ensure about the presence of such elements at the central place of that?
In that very dry laboratories, such kind of considerations of the data science provide the insurance of the certain metals at the central place through which we can establish the structures accordingly. Simulated methods is very much important. Molecular mechanics, simulation, all these things are very much important accordingly. Quantum mechanical curations of the structures data. It is important now. Large scale and the small molecules, and these are the providers generating high resolution data. By using that, you can perform your chemical research. Algos forms very much important to assign about the molecular structure, because whenever we have to decide the molecular structures, many more spectroscopic methods are still being used. That may be UV, that may have the mass spectroscopy. लेकिन यहाँ पे 3D को जानने के लिए हम लोग एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं, और किसी भी सब्स्टिट्यूएंट्स के मोइटीज को जानने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गो फॉरवर्ड्स. इट इज इंपॉर्टेंट पाथवे सिमुलेटेड, क्योंकि मैं शुरू में भी कहा था. क्वेश्चन है कि व्हाट मॉलिक्यूलर फीचर्स कंट्रोल्स इनहिबिटर्स बाइंडिंग. इट इज इंपॉर्टेंट. हाउ डू म्यूटेशन इंपैक्ट बाइंडिंग? बिकॉज म्यूटेशन इज व्हाट? सडन चेंज. सडन चेंज किसमें हो गया भाई? हम लोग कहते हैं कि जो कैंसर है, कैंसर क्या है? अनचेक्ड सेल डिवीजन. अब अनचेक्ड सेल डिवीजन में क्या होता है? म्यूटेशनल चेंज. तो जो म्यूटेशनल चेंज हो गया, इरेटिक चेंज, सडन चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कंप्यूटर मॉडल सिमुलेशंस, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बट नाउअडेज वी आर वेरी मच हैप्पी टू नो the medical science advancement so far as the curiosities of the blood cancer as well nowadays. Blood cancer भी अब वो नहीं रहा कि अब नहीं होगा ठीक, क्योंकि सिमुलेटेड मेथड से उसका जो न्यूक्लियोटाइड चेन में सीक्वेंस चेंज करता है अनचेक्ड सेल डिवीजन के माध्यम से 2 to the power n, that can easily be simulated through the computer models. And thanks goes to the researcher of the US that trying their best to establish the good medical establishment for the peoples of every who resides here in the world and the global sites. If the people have such kind of noxious disease of the blood cancer, as I hope in the coming future as well, through the process of simulation of the nucleotide sequences, that can also be curable very soon. Chemical info design and chemia. It is important. 2 strategies are needed. One, CAM info tools, that is concept, and reactions in addition to that is molecules. Quantum chemical database and molecular modeling database. It is very much important to simulating the data through the computer, and through the computers, if it is simulated, then that come before us in the modular form, and we can assure about the existence of the compound and the good result in the researcher. It is calculation workflow, input program, supercomputers. मैंने शुरू में भी कहा था, यही है हमारा ड्राई लेबोरेटरीज लैब. यही जो अभी स्क्रीन शेयर किया गया है सर, यही है हमारा ड्राई लेबोरेटरी लैब. दैट शुड बी टेम्परेचर कंट्रोल, दैट शुड बी ह्यूमिडिटी कंट्रोल, दैट शुड बी dust control, that should have excellent power supply. If you do it, then you can perform your work in very good way, that giving the good result, that provide the very nice research activity in the science, that you make yourself as excellent researchers. मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, ना संघर्ष ना तकलीफें क्या मजा जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में. सर, लक्ष्य that must we have in our mind. If the लक्ष्य is very stiff to go forward to establish anything in very upright way within the agreed time period, चाहे मेजर्स ड्राई लैब का हो, चाहे मेजर्स वेट लैब का हो, if junoon still that you have, you must come on the front and renew the concept, make the establishment of the research by your own end, and giving the good result for yours and for the society. It is the things that parameters, structure, activity relationship important है, chemical pharmacokinetics properties, compound history, patentability, toxicity, synthetic fit. क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट होता है कि whenever we start our research in wet lab, तो वहां पर
हैजार्डस है, रिस्की है, लेकिन हमारे वेट लैब एक्टिविटीज में रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत कम है, रिस्कलेस है, बट वी मस्ट बी रिस्की मोर अबाउट द पावर एक्टिविटी दैट बीइंग एसोसिएटेड टुगेदर। लेकिन वहां पर वी मस्ट टेक वेरी मच प्रिवेंटिव मेजर्स, बी सेफ व्हेन वी परफॉर्म आवर एक्सपेरिमेंट, व्हेन वी परफॉर्म आवर रिसर्च अकॉर्डिंगली। It is web services and that provide the very good services to the concerned one, and the people of life science, people of chemical science, people of basic science, और social science के लिए तो हमारे सैलन सिंह साहब हैं ही for providing service to respective one. It is important web services, flow sheets, STS data organizations flagging. Whenever we perform our activities accordingly, such things are established, things are come before us to make the oncology and ontology as well. Then you can use it and come forward and making the very much high intensity amplifiers to make it much more brilliant. Java applications are there, some more XML studying instances, interface activities are there, some other open source activities, chemistry analysis routines are there. By using all those things, we can confirm and establish your web services accordingly. These are the data that you can use and go forwards. टॉक्सिक हैजार्ड इन वर्बोल्स, ये जो मैं शुरू में भी कहा कि हमारे ड्राई लेबोरेटरीज में टॉक्सिसिटी कम है, लेकिन वेट लेबोरेटरी में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, वहाँ रिस्क ज्यादा है, हैजार्ड ज्यादा है. That's why we must take much more careful about that when we perform our activity and lab work in wet lab. It is workflow diagrams, the things that I displaying through the services that going through and come on the points of the amplifier sites, screening the compounds, and it is the upper limits, screening scratch, datas, wave services कहाँ है वो आप indicate कर रहा है, input output, being cell scriptings, and through this you just come on the screening compounds. You just start the drug property, because drug में दो चीज बड़ा important होता है, drug discovery and drug design. तो ड्रग जब तक आप अपने रिसर्च में डिजाइनिंग वर्क नहीं करेंगे तब तक आप कल्मिनेशन पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये बात हमेशा रिसर्च में ध्यान रखना है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशा की तलाश करो. मैं अपने रिसर्च में ये करना चाहता हूं कि एक ऐसा रिसर्च हो जो कि हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए, हमारे सराउंडिंग के लिए, हमारे स्टीफ सराउंडिंग पीपुल के लिए, हमारे नीडी बेस्ट पीपुल के लिए, हमारे क्रियोटिक सेट्स के लिए इतना अच्छा हो कि दैट मस्ट बी वाइडली एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज्ड अकॉर्डिंगली. और एज आई होप such kind of activity of screening must always giving the good thrust and good forward for your considerations accordingly. These are the informatics that being used, synthetic chemist है, biologist है, modeler है, pharmaceutical है, computer scientist है, जो हमारा main concern है dry laboratories का. More definitions are there sir, computational chemistry, molecular modeling, 3D graphics, जो मैं कहा एक्सरे क्रिस्टोग्राफी से आप यूज करें. कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज drug discovery and drug designing should made through the computer simulation and computer generated model, then that is the computer aided drug designing. All these things, all are correlated components of the drug laboratories. It is traditional area of applications, database, chemicals, electronic publishing, very important. Government patent is important now. Government and patent databases is very much important nowadays for the medical and medicinal sciences, and how to make it patent and what databases are used for that. Itself is a separate branch that to be discussed separately. Pharmaceutically and life science industry, all these things are very much applicable, through which you can go and make it very much dispersion to the people of researchers. 60s का ICS था सर, 2D अब तो खैर 3D का जमाना है. You can go forwards. It is decorporatizations of the chemical informatics. PubChem, service-oriented architectures, packaging and processing important for the complex information. And these all are the different integrations of the words. Bioinformatics. ICS is the combination. Integrate किया गया. Genomics.
प्रोटियोमिक्स, ये सारे आईसीएस वाले हैं। मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डिसिप्लिन, it is a combination of the two engineering component, it is a combination of the two computational mathematics and technology, it is a combination of the information technology with the biology. That's why ICS is used to make this more convenient. और आज के जमाने में सर बायोटेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। Isolated research activity is very much obsolete, less demanded. You must make the research activity with ICS. These are the main player of the commercial sites, as well academia, publications, distribution list, the things that people may use for the purpose of distribution as well. And it is a discussion list of the house, sources, free software people can use for making the whole confirmation, 3D by X-ray crystallographic methods, protein and the interactive with the visualizations component, and there is nucleotide sequencing methods as well. Algos, genetic workflow, very important. It is molecular modeling and is very much important for going the dry lab activity researcher, experiments, chemical concepts. Researchers का क्या होना चाहिए, chemical concept होना चाहिए, experiment होना चाहिए, और फिर सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर सिमुलेशन होना चाहिए, मॉडलिंग होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, डाटा साइंस का एनालिसिस और प्रोसेसिंग होना चाहिए in order to confirm your molecular modeling. It is new environment for molecular modeling. Researchers, what is being required in order to perform your activity of the research through the dry lab activities? These all are the whole component consideration for the molecular modeling that must be required for the researcher to go forward and establish their own research in very nice way. हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट। एक है, मैं बार बार कह रहा था कि डाटा साइंस में डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा माइनिंग, जो शैलेंद्र सिंह साहब SPSS के एक्सपर्ट हैं सर, दैट इज अ स्टैटिस्टिकल पैकेजिंग फॉर सोशल साइंस, वो भी डाटा माइनिंग के प्रोवाइडर हैं, हेल्पर हैं, इनकर्सर हैं। और यहाँ पर हम बेसिक साइंस में what the different tools are very much indispensably used to make the data mining, then through which we can establish the actual accurate structures of the chemical compounds, and that is very much important component of the dry laboratories. And thank you very much for the stiff listening. थैंक यू सो मच सर। आपने Thank you, sir. हाँ, ड्राई लैब्स के सारे आयामों को एक लेक्चर में समाहित कर दिया। मुझे तो लग रहा था Sir, सर कम से but कम one इसके thing, लिए sir, तो ये 3 लेक्चर होने चाहिए थे। before one thing, sir, जी। मैं कब समाप्त करने के पहले एक लाइन कहना चाहूंगा कि खुदा से दुआ है मेरी, आपकी उम्मीदों के कमल खिलते रहे, आप अपने मंजिलों तक पहुंचे, आपके राहों के दिए जलते रहे। जो रिसर्च का रहा है सर, वो हमारे रिसर्चर का बहुत आगे तक खिले। इट्स माय एंटिसिपेशन एंड द क्वाइट थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन who joined here, and I wish you all the best, all the researcher people, just to make the upright things in the coming futures through the dry lab activity in science education and the research activities as well. Thank you very much, sir. बहुत बहुत प्रणाम to each and everyone. एंड किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो एक बार जरूर पूछिएगा सर से। अपने प्रश्नों को रख सकते हैं।